Hi guys, so today is the day when I am finally flying to the US, a late night flight, and as you can see, packing is almost done. Mom is giving the final touches, and because she does not trust me, she's like, तुम पैक करोगी तो कुछ नहीं मिलेगा, so she's packing for me. So I'll show you the entire day, so please watch this video till the end. वैसे ये इसमें मैंने खाने पीने का सामान रखा है, बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से प्लेट्स वगैरह, एंड इसमें कुछ डेली एसेंशियल्स लाइक ट्राउजर्स एंड सम मोर फूड, सम हैंगर्स एट्सेट्रा. कुकर इज़ वेरी एसेंशियल इन यूएस. वहाँ पे मिलती है बट इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है. सो these things you should definitely take from here. And since it's done now, इसको हम अभी बंद कर देते हैं. So हर रोज़ after lunch I come to feed some birds and they are here. तो और ये जो वाइट वाला है ना, ये कभी कभी मेरे हाथ पर आके बैठ जाता है. ठीक है, लाइक मैं अगर पास में जाऊँ तो एवरीवन एल्स विल रन ऑफ. ओके, लाइक या सो एवरीवन एल्स रन्स ऑफ, बट वो वाइट वाला कभी कभी मेरे पास आ जाता है. एंड सो आई एम लीविंग टुडे. तो कल से आप लोग अपना खाना ढूंढ लेना कहीं और. Or else I'll just ask my mother to feed them every day, but she's busy and she might forget sometimes, so I'm gonna miss these birds too. मैंने इनको बहुत सारा चावल खिलाया, but I think they're still hungry because they're still lurking around. So okay, I'll just feed you some more rice, I guess. तो हम अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ. Meditation of Preeta going to US. Now we are एयरपोर्ट की तरफ. हमारी फ़्लाइट है 9:45 बजे की एंड अभी बज रहे हैं 6. तो चेक इन अभी तक हो नहीं पाया है, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं. कोशिश कर रहे हैं. आज क्रिसमस है, देखते हैं कितना जैम है रास्ते में और कितने बजे तक हम पहुंचते हैं. होपफुली वी विल रीच सून. यस, वी विल रीच सून. ओके, एनफ फॉर द वन शॉट. ये सुधी पल्ले पल्ले. बहुत अच्छे से सजाया है शहर को क्योंकि आज है क्रिसमस. बस देख के थोड़ा सा मूड अच्छा हो गया था मेरा. 25th था तो एयरपोर्ट भी बहुत अच्छे से सजा हुआ था. इट वॉज लुकिंग रियली प्रिटी. और फिर एक बार उतरते ही हम लोग फिर लग गए सामान को ट्रॉली में इकट्ठा करने में और फिर उस पर सामान रखने में. एंड ऑल दिस व्हाइल आई वाज जस्ट रियली टेंस्ड एंड रियली अपसेट बिकॉज आई एम लीविंग देम आफ्टर दिस, बट दैट्स ओके. और सो मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गई हूँ एंड नाउ आई एम जस्ट अबाउट टू ड्रॉप माई लगेज एट द international check-in counter, which is 14 and 15. I'll just show you. This is the
काउंटर। तो मैं तो पहले एक दूसरे काउंटर में जाके खड़ी थी विच इज़ फॉर नेशनल ट्रैवल, आई मीन फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल। एंड वहाँ पे 10 मिनट खड़े रहने के बाद मुझे पता चला कि दिस इज़ द इंटरनेशनल वन। सो या लाइक 10 मिनट्स वेस्टेड। बाहर अगर मेरे पेरेंट्स खड़े हैं और उन्होंने ये देखा है तो मुझे इसके बारे में बाद में ज़रूर सुनना पड़ेगा। मेरा सब कुछ हो गया, हैंड बैग चेक इन एंड लगेज चेक इन। लगेज मुझे अल्टीमेटली मेरे डेस्टिनेशन पे मिलेगी विच इज़ डेट्रॉइट एयरपोर्ट। एंड आई एम ग्लैड बिकॉज मुझे फिर लगेज लेकर दौड़ भाग नहीं करना होगा बॉम्बे या पेरिस एयरपोर्ट पे। सो दैट्स अ रिलीफ। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू गेट नंबर 20। सो लेट्स गो देयर एंड लेट्स गेट सीटेड फॉर आवर ट्रैवल। आई थिंक ये कोई फ़्लाइट है जिसकी चेक इन अभी स्टार्ट हो गई है। ग्लैड वी हैव सम टाइम। वी गो टू गेट नंबर 20 विच इज़ दिस वन। यस, एंड जल्दी करो भाई, आप लोग की फ़्लाइट छूटने वाली है। सो वी हैव रीच्ड आवर गेट एंड यहाँ पे मुझे और 3 घंटे बैठना पड़ेगा। सो वी आर गोइंग फॉर बोर्डिंग नाउ। Turns out my flight was late by 15 minutes, but it's not. It's 9:10 right now and my flight is at 9:45, so I think we'll fly by 9:45. Initially it was delayed for 15 minutes, but I think we're gonna go on time. यहाँ पे मुझे अपनी सीट मिल गई थी एंड मेरी आयल सीट थी। लेकिन मेरे बाजू में जो आंटी बैठी थी शी वाज सो वार्म एंड सो नाइस। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अकेले ट्रैवल कर रहे हो एंड आर यू कंफर्टेबल एंड एवरीथिंग। सो टेक ऑफ के टाइम पे मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी बिकॉज आई वाज रियली मिसिंग माय पेरेंट्स। सो शी मोटिवेटेड मी सेइंग कि देखो ये सब तो होता रहता है, you will be back soon in no time and then again you can be with your parents after you finish your course. So मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। Honestly, it's such a relief when you get good co-passengers. Your entire journey can be so much better. So कुछ टाइम के बाद क्रू मेंबर आती है और वो मुझे ब्रेकफास्ट देकर जाते हैं। So breakfast में there was a veg sandwich and a sugar plum cookie and some mixed fruit juice. And honestly this was really refreshing because I could take my mind off the things that were pestering me. So it was good. And in 2.5 hours we land at Bombay airport safely. And one thing about this flight was कि this was operated by all women crew, which is really good to see. So हम पहुंच गए बॉम्बे एयरपोर्ट and we need to go to the departures which are like 2 level up from here. So what everyone told me. So I think we're just gonna take this. This is it, right? Yep, this is it. Okay.
मेरे आगे के 2 फ़्लाइट्स के बोर्डिंग पासेस मुझे कोलकाता एयरपोर्ट से मिल गए थे, बट वहाँ पे मुझे गेट नंबर एंड सीट नंबर नहीं मिला था, जिसके लिए मुझे दोबारा एयर फ्रांस के काउंटर पे जाना पड़ा और वहाँ से मुझे मेरा सीट नंबर और गेट नंबर मिल गया। बॉम्बे एयरपोर्ट पे मुझे मेरे कोर्स के बाकी 3 दोस्त मिले और हम लोग फिर चले गए थे अपना सिक्योरिटी चेक के लिए, और उसके बाद हमारा इमिग्रेशन इंटरव्यू हुआ। इमिग्रेशन इंटरव्यू में हमसे जेनेरिक क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि वीज़ा इंटरव्यू में भी पूछे गए थे, like which university you're going to, what is your course, and sometimes they also ask ki what was your background, I mean what was your bachelor's, and if your course is different then they might ask that why you're switching to this specialization in your masters, and do you intend on coming back. So these are the questions that you can prepare for your immigration interview. Apart from this, it's a very light interview. It's a generic question answer session, nothing to worry about. बॉम्बे एयरपोर्ट इज़ ह्यूज एंड हमें एटलीस्ट 15 से 20 मिनट चलना पड़ा बिफोर वी कुड रीच एट आर डिपार्चर गेट, and there are these walking conveyor belts which just make it so much easier for the transportation. And after some time we reached our gate, and we reached the lounge area, and I quickly found a spot to charge my phone because it was gonna be a 9 hours long flight, and the lounge area was also pretty decorated. It was looking really nice. So our flight was at 5:30 and we boarded the plane at around 5. And here you can see inside the plane the crew members were really warm and nice and making sure that everything is properly kept in the luggage compartments, and we are comfortable. We are already now to the airport, and once upon the flight time today will be 9 hours and 40 minutes. This journey was going to be approximately 10 hours long, and I had got the middle seat. And on the window seat, there was another girl who was also a student, and she was headed towards Canada for her master's in biotechnology. We talked, and we got to know that both of us were sad because we were leaving India and our parents for the first time to go abroad. And yeah, we became friends instantly. Who said girls cannot be friends? Leave two desi girls alone and they'll be yapping and they'll be friends in no time. So we took off around 5:30, and as soon as the flight started, I just fell asleep. I was so sleepy and so tired that I slept. So I slept through even when the crew members came for serving us any beverage. They tried to wake me up, but my co-passenger, she asked them to let me sleep because I was really tired. But she woke me up for this one majestic view when we were flying over the Swiss Alps, and this is just once in a lifetime experience. It was so good. But soon the crew member came and asked us to, shut the blinds because it was really bright and the other people were sleeping. So we apologized and we tried to watch a movie. I picked Frozen because this is one of the best movies ever made. And yeah, I enjoyed it for the rest of my flight, but this also ended in less than 2 hours. I was wondering what to do next. I started watching the map and browsing through the other content that was there on the TV. And the rest of the time, I was just looking out of the window because the views were amazing. So I had picked the non-veg option, and the meal consisted of steamed eggs and veggies, some cut fruits, fruit juice, a very hard piece of bread, some butter, and fruit jam. But the only thing is that they served this pretty late. I mean, they served it just
before 45 minutes of landing, and by that time I had gotten pretty hungry. So anyway, so we landed after around 10 hours and we were in Paris, and we were really excited to be landing in Paris. But the thing is, we didn't have a transit visa because our layover was just 5 hours long, so we could not get out of the airport or go anywhere. So we just stayed in the airport and looked at the views around, and tried to take a peek into the city, and that's all we did. बस वीडियोस. So after landing at Paris airport, we had another round of baggage check-in, and after that we could collect our backpacks, and then we could get seated in the lounge area. So मैं अभी पेरिस एयरपोर्ट पे हूँ, and we have 2 hours until our next flight. So I'm just walking around in the airport because the next flight is also 9 hours long, so I'll have to sit straight for 9 hours, and before that I'm just trying to walk around a bit. Also the airport is very pretty, so I'm just walking around looking at the various brands that are there and trying to see if I can buy something from here, but everything is really expensive. I'll show you around. Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started.
वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, so I'm gonna divide it into 2 videos, and please don't forget to watch the part 2. It'll come soon. Bye.